নমস্কাৰ ইভিনিং হেডলাইনছলৈ স্বাগতম ষ্টুডিঅ'ত মই পাপৰি মাজুলী উপনিৰ্বাচনৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হৈছে ভুৱন গাম মাজুলী সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী মাজুলী সমষ্টিৰ বাবে তালিকাত আছিল তিনি প্ৰাৰ্থীৰ নাম তালিকাত আছিল বিতুপন দলে হেমচন্দ্ৰ দলেৰ নাম মাজুলী সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে ভুৱন গামৰ নামত মোহৰ মাৰিলে দিল্লীয়ে পুনৰ কৈছো মাজুলী উপনিৰ্বাচনৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰা হৈছে ভুৱন গাম মাজুলী সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী মাজুলী সমষ্টিৰ বাবে ইতিমধ্যে তালিকাত আছিল তিনি প্ৰাৰ্থীৰ নাম তালিকাত আছিল বিতুপন দলে হেমচন্দ্ৰ দলেৰ নাম মাজুলী সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী হিচাপে ভুৱন গামৰ নামত মোহৰ মাৰিছে দিল্লীয়ে প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া মই মাজুলী ৰাইজ আৰু আমাৰ সত্ৰ অধিকাৰ প্ৰবৰ্তকক মই সেৱা জনাই ল'ব লাগিব কাৰণ তেখেতসকলে যিটো মোক সহায় কৰিলে উৎসাহ দিলে আৰু ইয়াৰ লগতে একচুৱেলি আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীদেৱক আমি ধন্যবাদ দিব লাগিব আৰু ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাদেৱক ধন্যবাদ দিব লাগিব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আমাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱালদেৱক ধন্যবাদ দিব লাগিব আৰু লখিমপুৰ সমষ্টি প্ৰধান বৰুৱাদেৱক ধন্যবাদ দিব লাগিব লগতে আমাৰ ডক্টৰ ৰমেশ পেগুদেৱক ধন্যবাদ দিব লাগিব আপুনি আৰু বিমল বৰাদেৱক ধন্যবাদ দিব লাগিব আৰু ইফালে মাজুলীৰ উপনিৰ্বাচনক লৈ অভিভাৱক মন্ত্ৰী বিমল বৰাই মন্তব্য কৰিছে আজি ঘোষিত হোৱা মাজুলীৰ উপনিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী ভুৱন গামক লৈ মন্ত্ৰী বিমল বৰা আৰু নৱদলেক দায়িত্ব দিয়া হৈছিল সমীক্ষাৰ বাবে দুয়োজন নেতাই দলৰ কাৰ্যকৰ্তা দল সংগঠন সত্ৰৰ ভকত বৈষ্ণৱ আৰু সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহৰ লগত মত বিনিময় কৰি প্ৰতিবেদন দাখিল কৰাৰ পিছতে বিজেপি দলে ভুৱন গামক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া বুলি প্ৰকাশ কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীৰ মতে বিজেপি দলে ৰাইজৰ কথাৰ ওপৰত প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে আৰু ৯৮% লোকে ভুৱন গামৰ প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিছিল আৰু সেইমতে দলে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আনহাতে মাজুলীত কোনেও প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰি আবেদন জনোৱা নাছিল বুলিও জনায় আনহাতে পৌৰসভা নিৰ্বাচনত অগপ কম প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া সন্দৰ্ভত জিলা পৰ্যায়ত আলোচনা কৰি দিয়া হৈছে বুলিও জনাইছে আমাৰ দলৰ তৰফৰ পৰা মোক আৰু নৱদলে ডাঙৰীয়াক পঠাইছিল আৰু আমাৰ মাজুলীৰ যিসকল কাৰ্যকৰ্তা আছে ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ কাৰ্যকৰ্তা মৰ্চাসমূহৰ কাৰ্যকৰ্তা জিলা কাৰ্যকৰ্তা মণ্ডলসমূহৰ কাৰ্যকৰ্তা মণ্ডলৰ মৰ্চাৰ কাৰ্যকৰ্তাৰ লগতে আমাৰ আধ্যাত্মিক ক্ষেত্ৰ মাজুলী তাত সেইকাৰণে মাজুলীৰ পৰম শ্ৰদ্ধাৰ সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভুসকলৰ লগতো আলাপ আলোচনা কৰিছিলোঁ অন্যহাতে আমাৰ যি মিত্ৰজোঁট আছে অসম গণ পৰিষদৰ গণশক্তি লগতে অন্যান্য বিভিন্ন দল সংগঠন তথা ৰাইজৰ লগতো তেওঁলোকৰ দিহা পৰামৰ্শ মতামত লৈছিলোঁ আৰু সেই মতামতৰ ভিত্তিত আমি প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰি আমাৰ দলীয় নেতৃত্বৰ হাতত প্ৰদান কৰিছিলোঁ আৰু সেই নেতৃত্বই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই আজি মাজুলী প্ৰাৰ্থী হিচাপে উপনিৰ্বাচনৰ ভুৱন গামক ঘোষণা কৰিছে আৰু বাতিল নহয় বিহুৰ পাঠ্যক্ৰমত থাকিব স্বদেশ অধ্যয়ন শিক্ষা সংসদৰ অধ্যক্ষ ৰুক্ম গোহাঁই এই মন্তব্য কৰে আছু শিক্ষা সংসদৰ বৈঠকত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় বিহু সন্দৰ্ভত পৰিকল্পিতভাৱে শিক্ষা প্ৰদানৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰা হৈছিল যেহেতু যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল কিন্তু এই মুহূৰ্তত যেটো খবৰ আহি পৰিছে আমি ইতিমধ্যে কৈছো যে বিহুৰ পাঠ্যক্ৰম বাতিল নহয় পাঠ্যক্ৰমত থাকিব স্বদেশ অধ্যয়নো শিক্ষা সংসদৰ অধ্যক্ষ ৰুক্ম গোহাঁই এই মন্তব্য কৰিছে আৰু আছু শিক্ষা সংসদৰ বৈঠকত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে আমাৰ কাউন্সিলে স্পষ্টকৈ কৈছে যে স্বদেশ অধ্যয়ন যিটো স্বদেশ অধ্যয়ন বিষয়টো ভূগোল আৰু বুৰঞ্জী হিচাপে বিষয়টো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব কোনো কাৰণত বাতিল কৰা নহয় আৰু ইয়াৰ লগে লগে বিহু যিটো বিষয় সেই বিষয়টো থিয়ৰি পাৰ্টটো ঠিকে আছে প্ৰেক্টিকেল অৰ্থাৎ ব্যৱহাৰিক দিশটোৰ ক্ষেত্ৰত কিছু ধৰণৰ অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে সেই অসুবিধাসমূহ দূৰ কৰিবৰ কাৰণে এলানি আলোচনা অনুষ্ঠিত কৰিব আৰু বিভিন্ন ব্যক্তিৰ পৰা পৰামৰ্শ লৈ কেনেকৈ ব্যৱহাৰিক আৰু প্ৰায়োগিক প্ৰেক্টিকেল আৰু থিয়ৰি দুইটাক পৰিকল্পিত ৰূপত আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰি তাৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিব আৰু কোনো কাৰণত তেখেতসকলে এই বিষয়টো বাতিল নকৰো বুলি আজি আমাক স্পষ্টকৈ জনাইছে চৰকাৰৰ লগত কিছু আলোচনা কৰাৰ পিছত গোটেই বিষয়টো তেখেতসকলেও ৰাজহুৱা কৰিম বুলি কৈছে কিন্তু আজি আমাৰ আলোচনাৰ মূল বিষয় হৈছে যে স্বদেশ অধ্যয়ন বিষয়টো ভূগোল আৰু বুৰঞ্জীৰ ৰূপত পুনৰ বিষয়ত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত আৰু বিহু বিষয়টো যি ধৰণে পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰিছে সেই পাঠ্যক্ৰমবিলাক প্ৰায়োগিক আৰু ব্যৱহাৰিক দিশটোক অধিক পৰিকল্পিত ৰূপত আলোচনা বিলোচনা কৰি এই দুয়োটা বিষয়ক আগবঢ়াই লৈ যাবৰ কাৰণে কাউন্সিলে চিন্তা চৰ্চা কৰিছে আৰু আমাক সেই চিন্তা চৰ্চা আজি ব্যক্ত কৰিছে ৰঙাপৰাত ৰাইজৰ ৰোষত পৰিল বিজেপি প্ৰাৰ্থী স্থানীয় ৰাইজে খেদি দিলে ১ নং ৱাৰ্ডৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী ১ নং ৱাৰ্ডৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী স্বপন ধৰক পহু খেদা দিয়ে ১ নং ৱাৰ্ডৰ মূৰপট্টিত ভোট বিচাৰি যোৱাৰ সময়তে ঘটিল এই ঘটনাটো পৌৰসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী স্বপন ধৰক ভোট নিদিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ৰাইজে পুনৰ কৈছো ৰঙাপৰাত ৰাইজৰ ৰোষত পৰিল বিজেপি প্ৰাৰ্থী স্থানীয় ৰাইজে খেদি দিলে ১ নং ৱাৰ্ডৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীক ১ নং ৱাৰ্ডৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী স্বপন ধৰক পহু খেদা দিয়ে ৰাইজে
1 নং ৱাৰ্ডৰ মূৰপট্টিত ভোট বিচাৰি যোৱাৰ সময়তে এই ঘটনাটো ঘটে। পৌৰসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী স্বপন ধৰক ভোট নিদিয়াৰো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৰাইজে। গাঁৱৰ ল'ৰা চাইছোঁ, আমাৰ গাঁৱৰ ল'ৰাক দিয়া নাই, সেইটো কাৰণে খেতি পঠাইছোঁ। আমাৰ স্বপন ধৰক আমাৰ ভাল নালাগে আৰু আমি বিজেপিৰ পৰা আমি বেলেগ মানুহ চাইছিলোঁ, কিন্তু স্বপন ধৰক দিছে আৰু স্বপন ধৰক আমাৰ গাঁৱতে আগতে অহা নাই আৰু তাৰ ব্যৱহাৰটো ভাল নহয়। আমি স্বপন ধৰক কেতিয়াও সমৰ্থন নকৰোঁ, সেইকাৰণে আমি তাৰ ইয়াৰ পৰা খেতি পঠাইছোঁ। আমাৰ গ্ৰামৰ 1 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ প্ৰাৰ্থী লাগে, মানে আমাৰ লোকেল ল'ৰা লাগে আৰু আমাৰ বেলেগ নালাগে। ঢেকিয়াজুলি শোলমাৰীত নাহৰ ফুটুকীৰ আতংক। নাহৰ ফুটুকীৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে 3জনকৈ লোক। নাহৰ ফুটুকীৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে মাছমাছি হেঁচা কামাল হুছেইন, আশ্ৰাফুল ইছলাম নামৰ লোককেইজন। আহত 2জনক ইতিমধ্যে চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। বাহনিৰ মাজত খৰি আনিবলৈ যাওঁতে নাহৰ ফুটুকীৰ আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হয় লোককেইজন। এখন বাহনিৰ মাজত আশ্ৰয় লৈ আছিল নাহৰ ফুটুকীটোৱে। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে বন বিভাগৰ লোক আৰু এতিয়াও বাহনিখনৰ মাজত নাহৰ ফুটুকীটোৱে আশ্ৰয় লৈ থকাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে বন বিভাগৰ লোক তাত উপস্থিত হৈছে আৰু ৰাইজে যিহেতু যথেষ্ট আতংকৰ মাজত ইতিমধ্যে আছে, 3গৰাকীকৈ লোকক ইতিমধ্যে নাহৰ ফুটুকীটোৱে আক্ৰমণ কৰিছে। বহু দিনৰ পৰাই তাত চুপ লৈ থকা বুলি ৰাইজে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তলৈকে নাহৰ ফুটুকীটো তাতেই আছে বুলিও ৰাইজে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে। আমি কেইজনমান ল'ৰাই মানে এতিয়া হাবিৰ ওচৰে পাজৰেদি অহা যোৱা কৰি আছিল, সেইখিনিতে তেওঁলোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিলে যে বাঘ বুলি। তাৰপিছত আমি প্ৰথমতে বিশ্বাস কৰা নাই, পিছত গাঁৱৰ মানুহ আমি প্ৰায় 50-60জনে মানে গৈ পেলাই আমি বস্তুটো অলপ হেৰি কৰিলোঁ, কৰাৰ পিছতে আমিও আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে যে এইটো বাঘ হয়। এটেক কৰিছে, 3জনক এটেক কৰিছে। মৰিয়নি ধুদৰ আলিত শোকাবহ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়। দুৰ্ঘটনাত একেটা পৰিয়ালৰ 3জনকৈ লোকৰ শোকাবহভাৱে মৃত্যু হৈছে। জীয়েক, জোঁৱায়েক আৰু শাহুৱেকৰ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছে। দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হৈ পৰে। ৰাইজে বহু অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰু ৰাইজে উত্থাপন কৰিছে যে তীব্ৰবেগী টাটা চুমো আৰু স্কুটিৰ মাজত যি মুখামুখি সংঘৰ্ষ হৈছে, ইয়াৰ পূৰ্বেও এনেধৰণে টাটা চুমোসমূহ তাত তীব্ৰ বেগত আহে, য'ত এনেধৰণৰ দুৰ্ঘটনা পূৰ্বেও সংঘটিত হৈছে। আৰু পুনৰ কৈছোঁ, এটা অতি শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হৈছে মৰিয়নিৰ ধুদৰ আলিত। সেইজন মোৰ সৰু ভাইটি, মোক খোৱা ল'ৰা। সি মানে তাৰ চাচবুৰীক আৰু খুলকালিক লৈ খৰিকটাত থ'বলৈ গৈছিলে। সেই মুহূৰ্ততে নগা গাড়ী এখন আহি তাক খুন্দা মাৰি মানে স্পট ডেথ হৈ গ'ল। 3জনে ঢুকাইছে। এতিয়া কথাটো হ'ল যে নগা গাড়ী আজি বুলিয়ে নহয়, নগা গাড়ী উপদ্ৰৱটো মানে ডেইলি, এদিনৰ কথা নহয়, সদায় দিন তেহেঁতৰ মানে মৈমতালি হিচাপত গাড়ী চলায় এইটো ৰাস্তাত। তো আমি এতিয়া প্ৰশাসনক এটা দাবী জনাম যে নগা গাড়ী এইটো ৰাস্তা দি অহা যোৱা বন্ধ হ'ব লাগিব। পুনৰ ৰাজ্যসভাৰ বাবে আবেদন ৰিপুণ বৰাৰ লগতে আন কংগ্ৰেছৰ লোকেও আবেদন কৰিছে। বিগত 6টা বছৰত যথেষ্ট কাম কৰা বুলি মন্তব্য কৰে ৰিপুণ বৰাই আৰু সেইবাবে ৰাজ্যসভাৰ বাবে মই আবেদন কৰিছোঁ বুলি মন্তব্য কৰিছে ৰিপুণ বৰাই। ৰিপুণ বৰাই সাংবাদিকৰ আগত এই কথা জনাইছে যে বিগত 6টা বছৰ তেওঁ যথেষ্ট কাম কৰিছে আৰু সেইবাবে ৰাজ্যসভাৰ বাবে তেওঁ পুনৰ আবেদন কৰিছে। ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে সমগ্ৰ অসমতে 1000টা গোচৰ দাখিল কৰিছে বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চাই। শেহতীয়াকৈ ৰাহুল গান্ধীয়ে একতাৰ কথা ক'বলৈ গৈ টুইটাৰত এটা পোষ্ট দিছিল আৰু এই পোষ্টটোৰ পিছতে যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু তাৰ পিছতে কেইবাখনো থানাত ৰাজ্যত 1000টা গোচৰ দাখিল কৰিছে বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চাই। পোষ্টটোত ৰাহুল গান্ধীয়ে ভাৰতৰ অৱস্থিতি গুজৰাটৰ পৰা পশ্চিমবংগ বুলি উল্লেখ কৰিছে, য'ত উত্তৰ পূবৰ প্ৰসংগ অনা নাছিল বা কথা তাত নাছিল, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চাই ইতিমধ্যে ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ কৰিছে। এটা বিশেষ টুইট আজি কিছুদিনৰ পূৰ্বে ৰাহুল গান্ধীয়ে টুইটটো কৰিছিল আৰু এই টুইটৰ পিছতে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু বিশেষভাৱে টুইটটো কৰাৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তাত তেওঁ উত্তৰ দিছিল আৰু উত্তৰ পূবৰ প্ৰসংগ যে তাত নাই সেই কথা কৈছিল আৰু তাৰ পিছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যে যথেষ্ট এক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। সৰব হৈ পৰিছিল যুৱ মৰ্চা, সৰব হৈ পৰিছিল বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চা আৰু ইতিমধ্যে আমি শেহতীয়াকৈ যি খবৰ আমি জনাইছোঁ সেয়া হৈছে যে বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চাই 1000টা গোচৰ ইতিমধ্যে ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে তৰিছে। আৰু ইয়াৰে সৈতে বাতৰিৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ। এতিয়া বিশ্বই জানে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড।
नमस्कार, हमारे इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी सोनू। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की सुर्खियां। उत्तर प्रदेश में 9 जिलों के 55 सीट पर मतदान शुरू। सुरेश कुमार खन्ना, धर्म सिंह सैनी, आजम खान सहित कुल 586 प्रत्याशियों के भाग्य का हो रहा है फैसला। मतदान केंद्र पर मतदाताओं का पहुंचना जारी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। उत्तराखंड में सभी 70 सीटों पर हो रही है वोटिंग। खराब मौसम और बर्फबारी के बीच मुश्किल रास्तों को पार कर उत्तराखंड के दुर्गम इलाकों तक पहुंची पोलिंग पार्टियां। एक चरण में होने वाले चुनाव के लिए चुनाव आयोग की तैयारी पूरी। उत्तराखंड में मतदाता सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक कर सकेंगे मतदान। गोवा की सभी 40 सीटों पर मतदान शुरू। विधानसभा चुनाव के लिए 26 महिलाओं सहित 301 उम्मीदवार मैदान में। राज्य के कुल 1722 मतदान केंद्रों पर मतदाता कर रहे हैं वोट। धरती पर नजर रखने वाले उपग्रह EOS 04 का हुआ सफलतापूर्वक प्रक्षेपण। रडार इमेजिंग सैटेलाइट के जरिए कृषि से लेकर बाढ़ जैसी स्थिति पर रहेगी सटीक नजर। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सुबह 5:59 पर PSLV 52 ने भरी उड़ान। केरल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, दिल्ली सहित देश के कई राज्यों में आज से खुलेंगे प्राथमिक स्तर के स्कूल और आंगनबाड़ी भी। उच्चतम न्यायालय आज से शुरू करेगा फिजिकल सुनवाई। कोविड-19 से बचाव के तहत एहतियातों का भी किया जाएगा पालन। स्कूलों में हिजाब पहनने को लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट आज करेगा सुनवाई। मामले पर फारूक अब्दुल्ला और मुफ्ती ने दिए बयान, गरमाई राजनीति। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने कहा इस्लाम में हिजाब पहनना नहीं है जरूरी। तलाक और हिजाब को लड़कियों की प्रगति में बताया बाधक। और रूस और यूक्रेन की सीमाओं पर तनावपूर्ण स्थिति। रूस ने ब्लैक सी में किया युद्धाभ्यास। अमेरिका, ब्रिटेन के बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने नागरिकों को कीव छोड़ने की दी सलाह। बिगड़ती स्थिति के बीच दुनिया को उम्मीद, राजनयिक तरीकों से निकाला जा सकता है समाधान। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। उत्तर प्रदेश के दूसरे और गोवा, उत्तराखंड में एक ही चरण में होने वाले चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उत्तर प्रदेश और गोवा में मतदान सवेरे 7 बजे शुरू हो चुका है, जो शाम 6 बजे तक चलेगा, जबकि उत्तराखंड में मतदाता सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाल सकेंगे। और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण के मतदान में 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों के लिए मतदान शुरू हो चुका है। इस चरण में 586 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। चुनाव आयोग ने सुविधाजनक, सुगम्य, सहभागी, निष्पक्ष, पारदर्शी मतदान के लिए पर्याप्त इंतजाम किए हैं। 2017 के चुनाव में भाजपा को 55 में से 38, जबकि समाजवादी पार्टी को 15 और कांग्रेस को 2 सीटें मिली थीं। इस चरण में जिन उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है उनमें प्रमुख हैं योगी सरकार में मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, बलदेव सिंह औलख, छत्रपाल सिंह गंगवार और गुलाब देवी। पूर्व मंत्री धर्मपाल सिंह के साथ राजेश सिंघल, ब्रजेश नरेश सैनी, राजा भारतेंद्र सिंह और यशवंत सिंह वो नाम हैं जो आज के दौर में शामिल हैं। जबकि अपना दल एस ने गठबंधन के उम्मीदवार हैदर अली खान को मैदान में उतारा है। समाजवादी पार्टी ने इस चरण के दौरान पूर्व मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी, कार्तिकेय राणा, स्वामी ओमवेश, इकबाल महमूद, महबूब अली, मोहम्मद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को मैदान में उतारा है। जबकि बसपा ने मनीष और सर्वेश चंद्र धंधु को मैदान में उतारा है। राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवारों में विवेकांत, मुंशीराम और नीरज चौधरी हैं। कांग्रेस से संजय कपूर, ओमवीर यादव, काजिम अली खान, सलीम खान और पूनम भी मैदान में हैं।
वहीं 70 सदस्यों वाली उत्तराखंड विधानसभा में 63 महिलाओं सहित कुल 632 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें 13 सीटें अनुसूचित जाति और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित हैं। राज्य में कुल 11,697 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। दुर्गम इलाकों की वजह से मतदान सुबह 8 बजे से शुरू होगा। मतदाता शाम के 6 बजे तक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। और वहीं गोवा में 40 सदस्यों वाली विधानसभा चुनाव के लिए एक चरण में वोट डाले जा रहे हैं। 26 महिलाओं सहित 301 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें एक सीट अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है। कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए चुनाव आयोग ने हर बूथ पर 1000 वोटर का लिंक रखा है। राज्य में इस बार पिछले विधानसभा चुनाव से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कुल 1722 मतदान केंद्रों पर मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। पंजाब में विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत लगा दी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जालंधर में चुनाव प्रचार की कमान संभाल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जालंधर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। ये जनसभा पीएपी मैदान में आयोजित की जा रही है। पंजाब की 117 सदस्यीय विधानसभा के लिए 20 फरवरी को चुनाव होने जा रहा है। पीएम की रैली की एनडीए के उम्मीदवारों का न सिर्फ मनोबल इस रैली से बढ़ेगा, बल्कि राज्य के राजनीतिक माहौल को बदलने में अहम भूमिका ये रैली निभाएगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने PSLV C-52 के जरिए उपग्रह EOS-04 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। ये 2022 का पहला प्रक्षेपण अभियान है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से PSLV C-52 ने उड़ान भरी। धरती पर नजर रखने वाले इस उपग्रह को कृषि, वानिकी और वृक्षारोपण, मिट्टी की नमी और जल विज्ञान और बाढ़ मानचित्रण और मौसम स्थितियों की उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान अपने साथ 2 छोटे उपग्रहों को भी लेकर गया है। ये PSLV की 54वीं उड़ान है और 6 PSOM XL के साथ PSLV XL कॉन्फ़िगरेशन का उपयोग करते हुए 23वां मिशन है। इसरो प्रमुख ने मिशन से जुड़े सभी वैज्ञानिकों को बधाई दी है। देश में कोरोना की तीसरी लहर लगातार धीमी पड़ती जा रही है, तो वहीं टीकाकरण का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते देश में संक्रमण की रफ्तार धीमी पड़ गई है। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 172 करोड़ 81 लाख से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। टीकाकरण अभियान देश में लोगों की कोविड से सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम है और इसकी उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है। बिहार में कोविड के मामलों में कमी को देखते हुए आज से कोविड संबंधी प्रतिबंध हटाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में यह निर्णय लिया गया। राज्य में स्कूलों, कॉलेजों और कोचिंग संस्थानों को पहले की ही तरह पूरी क्षमता से चलाने की अनुमति दी गई है। फिलहाल 8वीं कक्षा तक के स्कूल 50% की क्षमता से ही चल रहे हैं। वहीं 100% क्षमता के साथ चलाए जाने के बावजूद सार्वजनिक परिवहन, पार्कों, सिनेमा हॉल, क्लबों, जिम, मॉल, दुकानों और सरकारी और निजी कार्यालयों में मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करना होगा। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामलों और संक्रमण की दर में प्रभावी कमी को देखते हुए राज्य सरकार ने आज से सभी कक्षाओं के लिए स्कूल खोलने का फैसला किया है। अभी तक प्रदेश में 8 तक की कक्षाएं बंद थीं। इस तरह अब सभी प्राथमिक विद्यालयों में नियमित रूप से पठन पाठन शुरू हो जाएगा। राज्य में कोविड-19 प्रतिबंधों में ढील देने के एक हिस्से के रूप में सभी कक्षाओं के लिए स्कूल फिर से खोलने की अनुमति दी गई है।
सभी शिक्षकों और छात्रों के लिए कोविड-19 दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ने के बाद पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में आज से फिर स्कूल खुल रहे हैं, यानी सोमवार से स्कूलों में एक बार फिर से स्कूल की घंटी बजेगी। छात्रों समेत पूरे विद्यालय के कर्मचारियों को कोरोना के नियमों का पालन करना होगा। शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार बच्चे स्कूल में आपस में लंच, किताबें, कॉपी, स्टेशनरी इत्यादि साझा नहीं करेंगे। स्कूल के मुख्य द्वार पर भीड़ एकत्रित नहीं होने देनी है। बच्चों के लिए कक्षा हाजिरी को बाध्य नहीं किया जाएगा। कक्षाएं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम में संचालित होंगी। ऑनलाइन कक्षाएं भी स्कूलों से ही आयोजित की जाएंगी। 18 से ऊपर की उम्र वाले स्कूल सदस्यों को कोरोना टीकाकरण की दोनों खुराक लगी होना अनिवार्य है। स्कूल प्रमुख नियमित रूप से स्कूल परिसर की सफाई और सैनिटाइजेशन करवाएंगे। थर्मल स्कैनर, सैनिटाइजर, मास्क और साबुन स्कूलों को पर्याप्त मात्रा में रखना होगा। स्कूल गेट से आने वाले हर विद्यार्थी और स्कूल स्टाफ की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 की स्थिति में सुधार के मद्देनजर उच्चतम न्यायालय आज से फिजिकल सुनवाई फिर से शुरू करेगा। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट में फिजिकल हियरिंग सप्ताह में 2 बार बुधवार और गुरुवार को होगी। यूक्रेन को लेकर उपजा संकट लगातार गहराता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनके रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन के घंटे भर चली बातचीत का कोई परिणाम सामने नहीं आया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन से सेना की वापसी और कूटनीति के रास्ते पर चलने के अनुरोध के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन पर हमले को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि इसके घातक और गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने कहा कि रूसी आक्रमण मानवीय मुश्किलें पैदा करेगा और रूस की स्थिति को प्रभावित करेगा। जो बाइडेन ने कई प्रस्ताव रखे जो मोटे तौर पर उन प्रस्तावों को वैसा ही प्रस्तुत करता है जो पिछले महीने संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लिखित रूप में किए गए थे। इस बीच यूक्रेन पर रूस के हमले की आशंका को देखते हुए पश्चिमी देशों ने अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर प्रयास तेज कर दिए हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।